Hello students, in this video lecture of Network Analysis and Synthesis, we are going to discuss about the solutions of previous year asked questions और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम उन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो ईयर 2018 एंड 19 में यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेस। तो इसका आंसर हमारे पास में क्या है? एन इंडिपेंडेंट करंट और वोल्टेज सोर्स इज दैट टाइप ऑफ सोर्स where the specified current और वोल्टेज doesn't change in the connected network। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट सोर्स या वोल्टेज या करंट सोर्स वो सोर्स होते हैं जिनकी वैल्यू थ्रू आउट द ऑब्जर्वेशन फिक्स रहती है, किसी और वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। While for the dependent sources, the initial values of current and the voltages changes with change in variable of the connected network। मतलब कि जो डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं उनकी वैल्यू सोर्स की अदर कंडीशंस के ऊपर भी क्या करती है, डिपेंड करती है एज पर द गिवन क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, ये हम एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की बात कर रहे हैं, तो फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड मतलब ऑब्जर्वेशन के टाइम पे ये हमारे पास में एक करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिए गए। दीज बोथ आर प्रैक्टिकल सोर्स। तो पूरे के पूरे ऑब्जर्वेशन में इसकी वैल्यू आई और इसकी वैल्यू वी रहने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें डिपेंडेंट करंट सोर्स की, तो ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स दिया गया है जिसकी वैल्यू अल्फा टाइम्स ऑफ आई के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जैसे जैसे हमारे पास में अल्फा की वैल्यू चेंज होगी उसी के हिसाब से हमारे पास में आई की वैल्यू, टोटल करंट की वैल्यू हमारे पास में चेंज होती आएगी। अब ये अल्फा क्या है? ये पैरामीट्रिक कांस्टेंट हो सकता है जिसके हेल्प से हम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट सोर्स एंड पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज सोर्स फॉर डिपेंडेंट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज गिव द स्टेटमेंट ऑफ टेलिजेंस थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट देने बोला गया था। तो टेलिजेंस थ्योरम क्या बोलती है? दिस थ्योरम इज वन ऑफ द मोस्ट जनरल थ्योरम which is applicable to any network made up of lumped two terminal element। इसका स्टेटमेंट क्या होता है? Elegance theorem states that any instant of time, the sum of instantaneous power delivered to an electric circuit is zero। ठीक है, किसी गिवन इंस्टेंटेनियस टाइम पे सर्किट की टोटल करंट की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास में मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से निकल के आता है। ठीक है, समीशन ऑफ वी के टी आई के टी इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी। तो ये अगर हम छोटा सा सर्किट कंसीडर कर लेते हैं ऐसा। क्लियर? अगर हम इसमें फ्लो होने वाले इसके पावर की बात करें P1, यहाँ पे पावर V इंटू आई या किसी भी तरीके से निकालते हैं P2 और इधर पे हमारे पास में पावर डिलीवर्ड है, तो ये समीशन इसका क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफाइन ट्री, ट्विग एंड लिंक्स। दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्राफ थ्योरी। तो अगर एक हमें ऐसा ग्राफ दिया गया है तो उसमें ट्री, ट्विग और लिंक को कैसे डिफाइन करेंगे इसकी बात कर रहे हैं। तो ट्री क्या होते हैं? ट्री इज ए सब ग्राफ which is obtained by removing some branches in such a manner that this subgraph includes all the nodes of original graph but doesn't have any closed path। ट्री किसी भी ग्राफ का वो सब ग्राफ होता है जिसमें से हम कुछ ब्रांचेस को एलिमिनेट कर देते हैं लेकिन सारे के सारे नोड उस ग्राफ के रहेंगे, बट देयर मस्ट बी नो क्लोज लूप। अगर ये ग्राफ के लिए बात कर रहे हो तो इस ग्राफ की कंडीशन पे हम देखने आ रहे हैं कि क्या है ट्री के वैल्यू। और ट्विग का मीन क्या होता है? ब्रांचेस ऑफ द ट्री इज कॉल्ड ट्विग। अगर इस ग्राफ की अगर हम बात करूँ तो इसमें तीनों नोड को इंक्लूड करते हुए, सॉरी चारों नोड को इंक्लूड करते हुए एक हमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें कोई भी लूप फॉर्म ना हो रहा हो, तो ये ट्री बोला जाएगा। अगर हम दूसरा ट्री लेना चाहें तो ये भी एक ट्री होगा। इज दैट ओके? और ट्री की जो ब्रांचेस होंगी, दिस 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 एंड दिस वन, उनको हम क्या बोलेंगे? ट्विग बोलेंगे। वाइल लिंक या कॉर्ड, लिंक या कॉर्ड हमारे पास में क्या है? ट्री की ब्रांचेस को कंस्ट्रक्ट करते समय, ट्री कंस्ट्रक्शन के समय
ग्राफ की जिन ब्रांचेस को हम एलिमिनेट कर देते हैं उनको हम बोलते हैं लिंक. सो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द ग्राफ दैट डजंट बिलोंग्स टू पर्टिकुलर ट्री. सो अगर हम इस ग्राफ को लेके चलेंगे तो इस ट्री के रिस्पेक्ट में ये हमारे लिंक्स या कॉर्ड हो जाएंगे. ये हमारे लिंक्स या कॉर्ड हो जाएंगे. There are a number of tree possible in this particular situation. Okay. Next thing is principle of duality. So what is duality principle? Two circuits are said to be dual of each other if mesh equation that characterize one have the same mathematical form as the nodal equation the other. अगर दो नेटवर्क हमें दिए गए हैं कुछ इस तरीके से, नेटवर्क नंबर 1 एंड नेटवर्क नंबर 2, ओके, अगर एक की नेटवर्क की नोडल इक्वेशन दूसरे नेटवर्क के मेश इक्वेशन के सिमिलर दिखाई पड़ती है, then both the network are said to be dual to each other. For example, there is a circuit like this, okay, V, R, L and C, I, और एक पैरेलल सर्किट में ऐसा दिया गया है, this one, this, V is the voltage, C, L, R and I. For network number 1, for this particular network, the mesh equation is V equals to Ri plus L di by dt plus 1 upon C integration it dt. And for this particular equation, ये सर्किट की अगर हम बात करोगे तो सर्किट 2 के लिए हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है करंट की, I equals to what, और सिंपली I equals to V divided by R plus C dV by dt plus 1 upon L integration V dt. So KVL for this equation or mesh for equation for this circuit is just similar to the nodal equation for this circuit. So both are said to be dual to each other. Basic example अगर देखते हैं तो Thevenin and Norton circuits are dual to each other. कुछ पैरामीटर याद रखिए, डुअलिटी में उसका चेंज किस तरीके से करते हैं. नेक्स्ट वन इज what is transient and steady state. So transient is what, when changes occur in any network for a fast short duration of time, the circuit responses changes rapidly. It may contains peaks of very high amplitude. This period of time is known as transient period या transient condition. जब सर्किट की कंडीशन चेंज होती है, सो फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम चेंजेस रैपिडली अकर करते हैं, ये कंडीशन या ये रिस्पॉन्स हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बोला जाता है. नेक्स्ट वन इज, तो इधर पे अगर आप देखते हैं तो फॉर दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम वी कैन कंसीडर इज एज ट्रांजिएंट कंडीशन. नेक्स्ट थिंग इज, आफ्टर ट्रांजिएंट पीरियड the circuit responses reaches its stable value. In such condition it is called steady state condition. उसके बाद में जैसे जैसे चीज़ें सेटल डाउन होना स्टार्ट होती हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टडी स्टेट कंडीशन बोलते हैं. इन दैट पर्टिकुलर केस द चेंजेस आर गोइंग टू बी डाई आउट और हमें एक स्टेबल वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाती है जो हमारा डिजायर्ड रिस्पॉन्स होता है. नेक्स्ट वन इज, in this particular network, we have to calculate the value of Z11 and Z21. These all questions are from University Examination 2018 and 2019. 2018 and 2019. Okay, so in this particular situation, we have to calculate the value of Z11
as the equation of z parameters are like this. So to calculate the value of z11, we have to put the value of I2 equals to 0. Okay, so for I2 equals to 0, what about the value of V1? If there is no current passes in this particular side, then V1 equals to simply 12 plus I1 ऐसे flow कर रही है plus 6 times of I1. So from here V1 upon I1 under the condition of I2 equals to 0, it is equals to 18 ohm, and this is our desired value of Z11. Next one is Z21. Z21 this value. So here we have to calculate the value of V2 upon I1 for Z21 under I2 equals to 0. तो यही कंडीशन ले रहे हैं, तो I2 equals to 0. इस सर्किट में देखिए, what about the value of current here? It is I1. So it is very clear that V2 equals to 6I1. V2 equals to 6I1. So V2 upon I1 for I2 equals to 0 equals to 6 ohm. And this one is the value of Z21. Is that okay? Next and the last question of section number A from University Examination 2018 and 19 is find the reciprocity condition in y parameter. So for reciprocity condition, first we have to write the equation for y parameter like this. For in case number 1 as the reciprocity के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक में दे के रखा हुआ है. इट विल बी बेनिफिशियल टू गो दैट पर्टिकुलर वीडियो. ठीक है, तो रेसिप्रोसिटी की कंडीशन क्या बोलती है? इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1 divided by V2 and it should be equals to I2 divided by V1. Okay, so here in case number 1, when V2 equals to 0, under the V2 equals to 0, if we consider the equation number second, then we have I2 equals to Y21 V1, and here I2 must be minus of I2. So the value of I2 upon V1 should be equals to minus of Y21, first condition. Equation number, for example, A. Next one is we have to calculate the value of I2 upon V1. We have calculate. Next one is I1 upon V2. So from equation number, when we consider case number second, so from case number second and equation number first, minus of I1, since I1 dash should be equals to minus of I1 equals to what value? It is Y21 V1 equals to 0. So Y12 V2, from here the value of I1 upon V2 equals to minus of Y12. Equation number B. Clear? For reciprocity, I1 upon V1, that means equation number A, equation number B, both must be equals to each other. So from here it is very clear that Y21 must be equals to Y12. So this is the condition of reciprocity. Okay, thank you so much. Please stay and like and subscribe the channel. आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं नेटवर्क थ्योरम और बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस आए हुए हैं यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन 2018 एंड 19 पे डिस्कस करूंगा. सो प्लीज स्टे ट्यून. ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.